today we are going our English grammar topic, article a and the. Articles are very important words in English because sometimes the whole sentence goes wrong due to not using the article correctly. So they are very important. First we see the kinds of articles. There are two kinds of articles, indefinite article and definite article. A and an are indefinite articles. A and an are called indefinite articles because they do not point out the particular person or particular thing. So they are called indefinite article. On the other hand, the is called definite article because it points out the particular person, particular place and particular thing. So it is called definite article. Now we see the rules for using articles. First, rules for the use of indefinite article means a and an. A और an का हम कैसे यूज करते हैं? In alphabet there are 5 vowels A, E, I, O, U and rest are consonants. A, E, I, O, U means not only these letters, it means they give us the vowel sound A, A, E, U like this. First A is used before a word beginning with a consonant sound. For example, a boy, a book, a union, etc. Secondly, A is used with a vowel giving the sound of a consonant, means vowel हो but उसका sound consonant हो. Just like a one-eyed person. One O is a vowel but now it gives the sound of a consonant. A university boy, a European. On the other hand, an is used before a word beginning with a vowel sound. For example, an apple, an umbrella, an orange. It is also used with a mute H. H is a consonant, but when it is mute, it produces the sound of a. For example, an hour, an honest person. Next, with a consonant pronounced with the sound of a vowel means consonant हो letter, but उसकी जो सी pronunciations है, उसका जो सा sound है, वो vowel sound होना चाहिए. जैसे N, M, P. M here, M is a consonant, but it produces the sound A. इसको जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो M ऐसे लिखा जाता है. NMP, NMA, NSP, NFIR. Next, indefinite articles are used before a singular countable noun when it is used for the first time. Repeat, indefinite articles are used before a singular countable noun when it is used for the first time. For example, I saw a boy. A cow was grazing in the field. Next, indefinite articles are used in the numerical sense of word one. For example, he gave me a book. Mohan bought an ox. Means numerical sense of word one. A book, an ox, a ox. Indefinite articles are used in the expression of price and speed. For example, he sells milk 35 rupees a liter. Sudhir drives car 60 miles an hour. दोनों में इसमें कॉस्ट दिखाई दी है कि 1 लीटर दूध की कीमत 35 रुपीज़
और इसमें क्या है, कार की स्पीड का दिखाया गया है कि एन आवर, 1 घंटे में उसकी कार की स्पीड क्या होती है, 60 माइल्स। These are the uses of indefinite article a and an. I hope you understand. मेन हमें जो पॉइंट नोट रखना है वो ये है कि ए ई आई ओ यू, हमने केवल ये लेटर्स नहीं देखने, हमने इसका साउंड नोट करना है। और बाकी जो मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं, उम्मीद करता हूँ तो आपको यह समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे और ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, यानी जहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, और इसके साथ साथ हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल केवल ए एंड द तक सीमित नहीं है, आर्टिकल्स के और भी कई मीनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। ओके।